प्रोग्राम बनवणार नाही, एवढी मेहनत कर, स्वतःला अपडेट कर. Good morning everyone and warm welcome to all of you. GSP of Rajashri Shahu College of Engineering Electrical Department organized guest session on AI based engineering energy conversion. My name is Sakshi Navnath Acharya, Electrical Engineering second year student. I would like to welcome to our guest honors Electrical Department HOD sir, faculty members and fellow students who all gather here today. I extend my warm greeting and heartfelt welcome to Chief Guest Mr. Milind Ankleshwar sir. He founder and director Mass Technology Pune, manager of SP Software Private Limited, manager Institutional Alliance, 22 plus years of IT educational experience. I would like to request to HOD sir to welcome by presenting him with a sampling of questions. Yes, no? Yes. The entire machine learning is aware about it, right? Basics of that you done in the first year, right? Second year, right? Right now you have. So anybody can let me know what is that agenda you are supposed to carry today and what will be takeaway after this guest session? What you are expecting? Some knowledge about AI and how to integrate AI in Python. Okay, good, very good. Anything else? क्या लेके जाना चाहते हो आप 1.5 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद? कुछ नहीं. Huh? Why this guest lecture is organized? What is the subject? What you supposed to gather from this knowledge point of view? I just made a compulsion from department and you came and sat, right? Yes or no? Come on, if you want the information then it should be interactive session. मैं हमेशा बोलता हूँ कि I am not interested in one way affair. Communication has to be from both the side. आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मुझे इंटरेस्ट आएगा सिखाने में, पढ़ाने में, नॉलेज शेयर करने में. आप चुप बैठोगे तो मैं भी चुप बैठूंगा. 1.5 hour के बाद बाय बाय. Yes. So please start responding to the questions, whatever there in your mind. So it will give me basically a tone to set my presentation, because it should not happen that something you probably already aware and I'm repeating that thing, wasting the time. And it should not also happen that I am taking something which you are already not aware at all and is going over the head. The session should be interactive, session should be communicative. It's not only I am talking and you are listening, you should also talk so that I can listen and respond to that. So, what you are expecting, why this session is organized, what you are expecting out of this session. मराठीत सांगायचं मराठीत सांगा काही प्रॉब्लेम. मराठी हिंदी इंग्लिश, नो तेलुगू नो गुजराती. हाँ क्विक. क्या एक्सपेक्ट करते हो सेशन से? शांत बैठना. कम ऑन. हाँ लास्ट वन.
Last ones, you only. Specs. What do you expect from the session? AI based power generation. Okay. Anything else? Sid. ऐसे ही रहते हैं क्या वैसे? एआयचा पुढे जाऊन आपल्याला वेळ टाईम लागतो. कशाच्या रिलेटेड? मोशन लर्निंग मोशनच्या बाबतीत पुढे काय features आहेत? AI आणि ML चा उपयोग आपण theoretical engineering मध्ये कसा करू शकतो? Power systems, power electronics, ML system. So how much you are aware about machine learning, except the word machine learning, except the word AI, except the definition, except what is the use? How much you know about machine learning or AI? Can I separate machine learning than AI? Yes, no? No. AI stands for artificial intelligence. What it means? Because the God has given brain only for the some of the species in this world. We are one of that. And the human brain is supposed to be the most developed brain compared to any other animal. Right? Now how the brain learns? हम कैसे सीखते हैं? Humans कैसे सीखते हैं? हमको कोई सिखाता है, right? Yes or no? So maybe from the parents to the teachers to the friends to the philosopher, guides, we keep on learning every day, every hour, every minute. Provided आप सीखना चाहते हो तो आपके इनपुट्स क्या है? ह्यूमंस के इनपुट्स क्या है जो सिखाते हैं आपको? 5 inputs are there which you capture the information from eyes, nose, ears, skin and tongue. Yes, no? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे पहली बार देखे, एक्सेप्ट द पोस्टर, लाइव यू आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी, नाउ योर आई इज स्कैनिंग मी नाउ, आप स्कैन कर रहे हो ना मुझे तब से लेके अभी तक, यस और नो? आपकी आई स्कैन कर रही है मुझे, मेरी हाइट कितनी है, वेट कितना है, हाउ आई स्पीक, हाउ आई बिहेव, हाउ आई लुक लाइक, स्किन टोन, हेयर कलर, आईज, आप स्कैन कर रहे हो मुझे, वैसे मैं भी आपको स्कैन कर रहा हूँ. That information you are learning, you get registered to the brain. How neurons are there? इसके पीछे neurons है. अगर कभी brain का structure देखा होगा आपने, तो brain is made with lots of neurons. तो neurons जाते हैं पीछे हर एक senses के through. Not only eyes, your ear also scanning my voice. Yes, no? तो ये सब इंफॉर्मेशन जा रही पीछे ब्रेन में. तो हो सकता है 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फिर से मैं आपको दिखूं, तो शायद आप मुझे रिकलेक्ट कर पाओगे, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर्ड है. आपने सीखा, आपने मतलब आपके ब्रेन ने सिखाया आपको कि ऐसा कोई आदमी दिखता है तो वो मिलिंद है. यस, नो? ऐसे 5 जो इनके इनपुट्स हैं, वहाँ से आप हमेशा सीखते रहो. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर अ चाइल्ड, ओके, योर पेरेंट्स और समबडी इज टीचिंग यू कि वहाँ पे फायर है, वहाँ पे मत जाओ. आपने जिंदगी में पहली बार फायर देख रहे हो, आपको बताया जा रहा है कि वहाँ पे मत जाओ, लेकिन ह्यूमन की क्यूरियोसिटी होती है. आप बचपन में जो भी आपको बोला कि मत करो, आप हमेशा करने को देखते हो उसको, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक उसको. तो अगर आपको बहुत बार बोला गया कि वहाँ पे फायर है मत जाओ, फिर भी आप जाओगे क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है उसको. एंड व्हेन वंस यू पुट योर हैंड और एनी ऑफ द ऑर्गन पार्ट इन दैट फायर, जलता है, यू फील द हीट, वो आपकी स्किन के थ्रू इनपुट जा रहा है ब्रेन को. तो नेक्स्ट टाइम जब आप फायर देखोगे फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी हाथ या पैर उसके अंदर रखने की, क्योंकि आपकी ब्रेन में रजिस्टर हो चुका है. दिस इज हाउ ह्यूमन लर्न्स. और हमेशा सीखते रहते हो आप लाइफ में, हमेशा.
रोज कुछ ना कुछ सीख, नॉट नेसेसरी वो टेक्निकली चीज़ें आप सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपका ब्रेन अच्छी तरह से काम कर रहा है, जिसको न्यूरो साइंस बोलते हैं, तब तक आप चीज़ें पहचान पाओगे। आपके घर में कोई ओल्ड एज रहेगा, नाना नानी, जिनका ब्रेन थोड़ा सा अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उनके जो ऑर्गन्स है उतना अच्छा काम नहीं कर रहे, आईज खराब हो गए हैं, ईयर सुनने को अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो पहचान नहीं पाते, राइट? एक सिग्नल ही नहीं जा रहा है। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड एज हाउ ह्यूमन लर्न्स। अब ये जो इंटेलिजेंस है ह्यूमन का, वो बाय बर्थ आता है, मतलब सृष्टि के क्रिएटर ने जो क्या किया है, ह्यूमन को जो ब्रेन दिया है, वो सीखते जा रहा है। आपको बाद में जन्म होने के बाद 5-6 साल के बाद ब्रेन नहीं फिट किया आपके बॉडी में, पहले से है। सो इट्स नेचुरल इंटेलिजेंस दैट यू हैव, बट दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The intelligence which is artificially poured and then it will start working is called as AI. और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मशीन की। कौन सी मशीन? मोबाइल नहीं, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर से। हम इलेक्ट्रिक मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैकेनिकल मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम मशीन की बात कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर से। यहाँ इसके आगे जब भी मशीन वर्ड आएगा, इट मीन्स कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर हैज अ ब्रेन विच इज कॉल्ड ए CPU। उस CPU को हम कैसे पढ़ाएं? जो आपने प्रोग्रामिंग में सीखा होगा, एक कॉन्सेप्ट जो है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर को आपको ये भी बताया कि कंप्यूटर इज अ डम्ब मशीन, खुद से कुछ नहीं करता, राइट? तो काम कैसे करता है कंप्यूटर? आप इनपुट देते हो, उसके ऊपर प्रोसेस भी आप ही दोगे उसको, दोनों चीज दोगे तो ही आपका आउटपुट मिलेगा। Yes, no. Take up any program, a small program of addition of two number. I take an index, int y, x is equal to x plus y. ये प्रोसेस है, ये इनपुट है, तब जाके आपका आउटपुट मिलेगा z. If you only give the input and if I don't give the process, you will not get the output. If you only give the process and if you don't give the input, you will not get the output. Am I right, wrong? You must have learned this, how computer works. Like for example, आपको मैंने सिर्फ दो नंबर दिए, 2 plus 2 और 2, इतने नंबर आपको मैंने दिए, और आपको मैंने बोला नहीं कि करना क्या है इसके ऊपर, आप आउटपुट दे पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। When I said कि इसका एडिशन करके दिखाओ मुझे, तब आपका ब्रेन काम करेगा, then you do the output. That is how computer also works. This is the traditional way how computer works. Okay, Arthur Samuel, who is Arthur Samuel, the founder of machine learning? He changed this. He said, why cannot machine learn the way human learns? So what he said, give machine the input, give machine the output, and through that find out the process. Find out the process. So your machine learning life cycle completely is changed than a traditional computer. आप इनपुट दो, आप आउटपुट दो, प्रोसेस खुद ब खुद मशीन फाइंड आउट कर लेगी। उससे होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ इनपुट दोगे और आउटपुट दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोसेस बताएगा क्या है उसमें। दैट इज मशीन लर्निंग। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं लेके चलूँ, आपने एडिशन सिखाई राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। इफ आई गिव द नंबर 2 and 2, व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस? 4. So these are input, this is output. When you start learning the arithmetic calculations, your teacher has only taught 2 and 2, 4. Later on, as you grow, you get masters into addition. You know that to get the output 4, you cannot only provide 2 and 2. You can also provide 1 and 3. You can also provide 3 and 1. You can also provide 0 and 4, 4 and 0. There are so many combinations through which you can get the addition as 4. अब जब ये पूरा मैं आपको इनपुट दूंगा, आपको आउटपुट भी पता है इसका क्या है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई करते हैं प्रोसेस इसमें कौन सी आएगी, प्लस की। इक्वेशन क्या बनेगा, प्लस का बनेगा। दिस इज मशीन लर्निंग।
The way human learns from the experiences, machine learns from the data. आपको डेटा देना है, आप डेटा दोगे, जितना ज़्यादा डेटा दोगे उतना ज़्यादा सीखोगे. That is what is machine learning. Am I clear the concept? So you cannot say AI is different and machine learning. Machine learning is one of the part of AI. Artificial intelligence. Intelligence which is artificially poured through the use of machine. How? You have to ask the machine to learn something. How it will learn? By providing the data. That is machine learning. And this concept, as I said to you, has been founded way back. ऐसा नहीं कि recent concepts है. Arthur Samuel, first run in 1959. ऐसा नहीं कि recent concepts है. So what definition he has given? Machine learning enables a machine to automatically learn from data, improve the performance from the experiences, and create the things without being explicitly told. आप उसको ट्रेन करो, वो आउटपुट देगा आपको. ओके, परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इम्प्रूव कर सकते हो. इतना इम्प्रूव करके रखो तो दैट लैटर ऑफ द प्रोग्राम की जरूरत नहीं. Is the definition given by the Arthur Samuel. Why there is so much of buzz for machine learning AI in last 2 decades? 2000 के बाद काफी ज़्यादा boom आया AI में machine learning. The reason, the data has increased too much over the cloud for the organizations. The decision making becomes difficult for humans. जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी पोर्टल लीजिए, लाइक आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल देखिए, आपका Amazon e-commerce प्लेटफॉर्म देखिए, millions of users are there, millions of products are also highlighted on the portal. Every time some new offers comes, the data has increased too much. Taking the decision on that data becomes very very difficult for humans. आप 400 डेटा के ऊपर काम कर सकते हो, 4 लाख के ऊपर नहीं काम कर सकते हो, लेकिन इफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी. That is the reason we need machine learning. We also need to solve the complex problems. We also need machine learning for decision making in various sectors, majorly finance, banking, insurance, pharmaceutical, healthcare, nowadays electrical systems, electronic systems. We need to take a decision. So for that also we need AI. We need to find out hidden patterns and extract useful information from that. This is the reason we need machine learning. That's the reason why it is increasing day by day. 10 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि AI इलेक्ट्रिकल में भी आएगा, AI प्रोडक्शन में भी आएगा, AI रोबोटिक्स के साथ इतना एडवांस हो जाएगा. But as the things are getting changed, because industry needs quick and fast decisions. My presentation is divided into 2 parts. First, to make you aware about machine learning. होता क्या है machine learning? उसके बाद then I come to a specific topic, AI in your domain, where I will give you a live example as well. Provided you have to keep on responding, you have to keep on relating what exactly it can be done with your existing domains. तो machine learning के 3 major types आते हैं: supervised, unsupervised and reinforcement. Supervised फिर से 2 है, regression and classification, and in case of your unsupervised, we are clustering and association. So what is supervised machine learning? The humans learn from the experiences. Somebody will teach you. Like for example, I am right now teaching you. Okay, your parents, your school teachers, your college teachers are teaching you. That means you are learning under a supervision of somebody. The way it is done, in a similar manner, the machine learning also learns under a supervision. That is called a supervised machine learning. अब सुपरवाइज मशीन में अगर आपको सीखना है, मशीन को सिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइक फॉर एग्जांपल, टीचर टीचर्स यू,
What is the difference between you and the teachers? You as a student and teacher as there. What is the difference? The difference is in knowledge. Difference is in experience. You cannot know the answer. The teacher knows the answer. कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं आपको कोई टीचर, right from a school days till today, okay, teacher knows the answer of that particular question. You are not knowing the answer. You are learning. That is called a supervised machine learning. तो supervised machine learning में आपके पास input भी है, आपके पास output भी है, दोनों है आपके पास. This is the example of supervised machine learning. You are giving input 2 2 1 3 3 1 0 4 4 0. You are also giving the output. Am I clear what I am saying? Because ये समझेगा तो मैं जो एग्जाम्पल आपके फील्ड के लिए देने वाला हूँ तभी समझेगा. और आपको रियल टेक अवे लेके जाना है इस सेशन का कि हाउ AI कैन बी यूज इन योर डोमेन, विच आई एम कैरिंग विद अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट विद द कोड. बट दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू लर्न दिस थिंग्स, इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. So supervised machine learning is a machine learning where you give input as well as output, and then machine learns from that. Under that we have two categories: classification type of machine learning and regression type of machine learning. So when we are predicting the output in the numbers, in numerical values, such kind of supervised machine learning is called as regression type of machine learning. जैसे आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो कि मुझे अगर 10 हाउसेस है जो मेरे पास ज्वाइन होते हैं तो मुझे कितना सोलर एनर्जी लगेगा, कितना किलोवाट सोलर एनर्जी लगेगा. How you calculate that? Based upon the usage, based upon the number of members in the house, and so and so. I am predicting the output in numbers. How much kilowatt solar panel is needed? That is called as regression type of machine learning. Where it is used, prediction of salary, prediction of stock market, prediction of the dollar values against rupees or vice versa, prediction of rainfall in millimeters. जब भी आप predict करोगे आउटपुट आपका numbers में आएगा. Such kind of machine learning is known as regression type of machine learning. Examples: stock market prediction, salary prediction. There are so many examples. Temperature prediction. What will be the temperature of Pune city tomorrow? You predict in numbers. That is regression type of machine learning. Another category is called as classification type of machine learning. What do you mean by classification of machine learning? Is basically when you predict the output in binary output. That is categorical value. Means either yes or no, true or false, male or female, mail is spam or not spam. All this example comes under a classification type of machine learning. If I ask the question, what will be the temperature for tomorrow in Pune city, the predicting number, वो example हो जाएगा regression का. And अगर मैं पूछूं, कल पुणे में बारिश होगी क्या? Your answer will be either yes or no. That is called as classification type of machine learning. Whether the patient has diabetes or not, whether the mail coming to you is spam or not, is all example of classification type of machine learning. Both are example of supervised machine learning. Supervised machine learning means a machine learning which has input as well as output. Am I clear with this? Yes, no? Feeling bored? बोर हो रहा है? Yes, no? Yes. किस किस को हो रहा है? किस किस को बोर हो रहा है? So I can change my tone. समझ में आ रहा है मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट और नो? Another category of machine learning is unsupervised machine learning. इसके आपको supervised machine learning you are giving input as well as output. Whereas in the case of unsupervised machine learning, you are only providing input. You are not providing output. आपके सिर्फ पास 2 2 1 3 3 1 ऐसा डेटा रहेगा. आपके पास आउटपुट नहीं रहेगा. तो जब आउटपुट नहीं होता है
Such kind of machine learning is known as unsupervised machine learning. Unsupervised, again there are two types. One is the clustering, second is association. यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका सिर्फ मैं आपको एज दूँ एज अ डेटा एज. Any prediction you can do from that? Obviously no. But then age you can cluster, you can group. Less than 20, greater than 20. How many students are there? You can cluster them. If I give the only city of the students from where they belong to, so you can cluster there. You can do any kind of prediction on that. Such kind of data which comes under unsupervised machine learning is considered as the clustering type of data. What is association then? How many you browse the e-commerce website like Amazon or Flipkart or Myntra? How many of you browse? Only 3. Rest, you never do any shopping from Amazon, e-commerce platform. आप करते हो नहीं करते हो? You never browse any of the e-commerce platform? Yes or no? Yes. Okay. So over there they use a mechanism called as association. आप use करते हो? Standard. For example, he is planning to buy XY product, takes a mobile phone. Once he add that item to the cart, before make the payment, you will see certain dialog boxes down. Which are they? Checklist, payment options, उससे पहले की बात है. discount options. वो तो कार्ड पे होता है. और क्या दिखता है? You get the recommendation. अगर आप मोबाइल फोन बाय कर रहे हो, बिफोर यू मेक द पेमेंट एंड चेकआउट, यू विल सी डाउन अ डायलॉग बॉक्स, अ विंडो which says people frequently buy this item also. Or we also said it's a recommendation. अगर मोबाइल फोन आप परचेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आईफोन परचेस कर रहे हैं, आईफोन का नॉर्मल प्राइस कितना होता है ऑन एवरेज? 50,000 and above on average, right? That means the e-commerce platform knows what kind of this customer is, how much paying capacity the customer has. In case he is planning to buy an iPhone, that means he is planning to spend more than half of the lakh rupees. Recommendation जो आएगा रिकॉर्ड भी वैसी आएगी. आईफोन के साथ बॉक्स में चार्जर नहीं आता, यू विल गेट चार्जर एज अ रिकमेंडेशन. कैरी केस, कैरी केस 100-200 रुपये का नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि आईफोन ले रहे हो, राइट? इट इज मोर देन 50,000 रुपीज. 50,000 रुपीज आईफोन के रिकमेंडेशन में 100-200 रुपये का कैरी केस नहीं दिखाएगा. 1000, 1200, 1500 कैरी केस. वही अगर आप एंड्रॉइड फोन ले रहे 10,000 का, तो आपको रिकमेंडेशन वैसी है. दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन. किसके साथ क्या अच्छा जा सकता है. अब इसके लिए मशीन लर्निंग की भी जरूरत है. अगर आप कोई मार्केट में जाते हो, राइट, आपको ऑफर भी वैसे रहते हैं शॉप से. आप 3 ट्राउजर ले वो तो 1 शर्ट फ्री रहेगा, या बाय 2 get 1 फ्री. अगर आप 3 ट्राउजर ले रहे हो तो आपको नैपकिन फ्री नहीं देगा, हैंडकरचीफ फ्री नहीं देगा. रिकमेंडेशन also has to be done. That is a mechanism called as association. It is also a part of machine learning. और सिंपल एग्जांपल दूँ, अगर आपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्राउज नहीं किया है, ओके, 99.99 100% एवरीवन ब्राउजेस यूट्यूब, राइट, नेटफ्लिक्स, Z5, प्राइम वीडियो. अगर आप कोई मूवी देखते हैं, once you are about to finish the movie, start getting recommendation like that only. If you are seeing a sci-fi movie, you get recommendation like that. If you are seeing a thriller movie, you will see recommendation like that. It is called as association type of machine learning. Okay. And the third example of machine learning is reinforcement. जैसे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आपके पास क्या था? क्लस्टरिंग, सॉरी,
क्लासिफिकेशन था और डिग्रेडेशन था। अनसुपरवाइज में आपके पास क्लस्टरिंग और एसोसिएशन है। रीइंफोर्समेंट एक ही टाइप है रीइंफोर्समेंट मशीन में, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ये यूज कहाँ पे होता है? मेजरली इन द रोबोटिक्स, मेजरली इन द, आपके डोमेन के लिए बात करें, मेजरली इन द रोबोटिक्स एंड मेजरली इन द गेम डेवलपमेंट। So reinforcement machine learning is a reward based system how it learns. मशीन सीखते कैसे? इससे कोई इनपुट डेटा नहीं है, कोई आउटपुट डेटा नहीं है इसमें, ये रिवार्ड से सीखता है। आपके राइट एक्शन और रॉन्ग एक्शन से इज कॉल्ड एज reinforcement machine learning. एग्जांपल गेम डेवलपमेंट। कोई भी गेम आप मोबाइल पे खेलते हो, कैंडी क्रश हो, राइट, टेम्पल रन हो, कोई भी हो, या आपका सूडो कोड हो, लूडो हो, चेस हो, ये सब गेम मोबाइल पे या लैपटॉप पे मशीन लर्निंग का यूज करके डेवलप किए हैं, कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। टू गिव एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, यू डाउनलोड द गेम फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर नॉट अवेयर हाउ टू प्ले दैट गेम, राइट? तो आप थोड़ा सीखते हो उसको, पहले कुछ ट्रायल लेते हो उसको कि कौन सा की प्रेस करने के बाद क्या होता है, and then जैसे आप सीखोगे then you actually start entering into the game. So take an example of chess. Chess किस लोगों ने खेला है मोबाइल के ऊपर, या लूडो? Okay, when you play a chess or a ludo, okay, against the computer in the level 1, I'm talking about level 1, which is the basic level. So 99.99% you'll only win. Am I right or wrong? क्यों? Why you will play linear? Because if I have downloaded the app first time, and The way you are learning, computer is also learn. As I said, reinforcement machine learning में कोई इनपुट डेटा नहीं है पहले से, मॉडल ट्रेंड नहीं है वहाँ पे। जैसे आप गेम को सीख रहे हो, वैसे ही कंप्यूटर, मतलब जो मशीन लर्निंग का मॉडल उस गेम में लगाया हुआ है, वो भी आपके एक्शन से सीख रहा है। अगर वहाँ पे प्री ट्रेन मॉडल डालते, समझो ट्रेनिंग किया हुआ मॉडल डालते चेस में, तो आप लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी गेम को, चेस का एग्जांपल दे, प्री ट्रेन मतलब उसको सब पता है। ऐसा मॉडल मशीन लर्निंग का उस गेम में डालते हैं, समझो आप लेवल कभी भी खेल नहीं पाओगे, क्रॉस ही नहीं कर पाओगे आप लेवल। उससे क्या हो जाएगा? यू विल नेवर गेट अट्रैक्टेड टू दैट गेम, द गेम विल नॉट गेट पॉपुलर, if you will not, the game will not get popular, you will not play it, you will uninstall it, number of downloads will be lesser, number of people using that game will be lesser. उससे क्या होगा? Ads coming to that game is also lesser. अगर एड्स कम आएंगे तो बिजनेस आएगा कहाँ से? गेम डेवलपर। एंड ऑफ द डे सब कुछ चल किस रहा है, किस लिए रहा है? To earn the money. Yes or no? So level 1 is not made difficult. It's not because the computer is with you. The computer is also learning. So for every right action you will get the plus point. कुछ rewards मिलते हैं आपको। वो रिवार्ड हो सकता है पॉइंट के बेसिस में हो, पॉइंट्स के बेसिस में हो, राइट, लाइफ के बेसिस में अगर आप एक्शन गेम खेल रहे हो तो। एंड फॉर एनी रॉन्ग एक्शन इट इज द पॉइंट विल बी डिडक्टेड। So the computer is learning from what you are doing. And as you mature and you get progress, computer also learns, computer also becomes mature. So next level keep on getting difficult. That is the example of reinforcement machine learning. Robotic dogs, robotics are also example of reinforcement machine learning. आपने रोबोट बनाया, लैब में टेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक हाउस कीपिंग के लिए एक रोबोट बनाया, टेस्टेड है, सब कुछ है, बट जिस घर में जाके उसको काम करना है वहाँ पे उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपने इस पर्टिकुलर एरिया में रोबोट टेस्ट किया, इस रूम की साइज अलग है, जिस रूम में आप डिप्लॉय करोगे उसकी रूम साइज अलग है, so he has to learn. Is an example of reinforcement machine learning. So these are the major three types of
machine learnings are there, part of AI. Okay, and where we can use machine learning? कहाँ पे होता है AI? Technically every field, automatic language translation, medical diagnostics, robotic cars, driverless car or self-driving cars, email spam filtering. You have specific PV panel orientation and systems. It also used to predict analytics for weather patterns to maximize energy generations. अलग अलग वेदर्स में आपका जो सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम कैसे करें, इस प्रेडिक्शन के लिए भी आप AI का यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी जनरेटर। प्लस आपका जो PV पैनल है which is majorly the source to generate the solar energy, उसकी लाइफ कैसे बढ़ाएं, because the wear and tear will happen on that particular panel against the wind or any other the conditions of the environment. How I can optimize, how I can improve the life of my PV panel by putting the right orientations. I can do that. I can also use AI in wind energy, turbine की efficiency monitor करने के लिए real world time में, and wind patterns real time development इसकी होगी, उसके लिए हम AI यूज कर सकते हैं. Predicting the wind speed using machine learning for better energy output. You can use the AI or machine learning to predict the wind speed by using the better energy output. In smart grids, we can use for energy load balancing. AI system can balance demand and supply dynamically. Real time is very very important, right? So that we can do. Algorithms can prioritize energy storage and release from batteries or other reservoirs. आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लोड बैलेंसिंग करना है एनर्जी का, तो आपका परमानेंट सोर्स और बैकअप सोर्स क्या है, हाउ आई कैन बैलेंस दैट, और एआई एप्लीकेशंस कैन बी एबल टू डू दैट. फॉल्ट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द ग्रिड फॉर आइडेंटिफाइंग फॉल्ट्स और इनएफिशिएंसीज, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यूजिंग एआई टू प्रिवेंट फॉल्ट्स. नॉर्मली अभी क्या होता है, जो आपका जो फॉल्ट डिटेक्शन है, जो ग्रिड्स आते हैं, जो आपके पास खुला है, normally what happens, there is a periodic maintenance, maybe after 6 months, after 1 year you do that. But the AI applications will tell you, okay, in this particular area you need to do the preventive maintenance so that there will be no losses of the energy. Why to wait for 6 months, why to wait for 1 year? So AI applications will help you to do the predictive actions for that, by which you can manage your maintenance so that the outages of that particular energy will be stopped. Battery optimizations. अभी जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, आप 5 साल पहले इलेक्ट्रिक, स्पेसिफिकली इन द 4-wheeler segment. In India, still the people are not buying EV in the 4-wheeler segment. कार मार्केट में EV का भी इतना शेयर नहीं है, और 2-wheeler में है. You must be agree with this, right? क्यों नहीं है? और 2 मेजर रीजन. एक तो रेंज जो प्रोवाइड कर रहा है EV 4-wheeler में वो कम है, अराउंड 200 to 300 एवरेज मिलता है रेंज. एंड सेकंड, चार्जिंग स्टेशन अवेलेबिलिटी इज नॉट देयर. So even if government improve the charging station facility and the battery capacity is not increased to provide more range, you still not buy the EV. because चार्जिंग स्टेशन में भी आपको कम से कम फास्ट चार्जिंग करेगा, कम से कम 30 मिनट आपको वेट करना मिनिमम. But if you see the news from last 3-4 months, specifically from the passenger vehicles EV perspective, Mahindra and Tata are launching the EVs which are providing higher ranges, 500 kilometers and above that. How it is possible? Regeneration facility of the EV should be AI based. उसको अगर समझ में आ रहा है कि बैटरी ड्रेन हो रही है तो 100 किलोमीटर आगे जाना है, देयर इज नो चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होते हैं,
how I can regenerate my battery and sustain for next 100 kilometers. So that is also possible with the battery optimization concepts. So AI model optimize charging and discharging cycles for lithium ion and other batteries, extending the lifespan of storage system to the critical limits. Thermal storage. AI enhances the efficiency of thermal energy storage by predicting the demand and patterns. Smart energy current system. AI in power electronics, enhancing the efficiency of inverters, converters, and transformers using AI algorithms. Dynamic control of power electronics for minimal energy losses. We also have AI in DC-AC and AC-DC convergence. AI can optimize power flow in real time for renewable energy systems like solar inverters. All these are the application areas where you can be able to use AI for that. बहुत सारे हैं. अब इसमें AI में क्या क्या आता है? मशीन लर्निंग आता है, जैसे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, मेटाएनालिसिस. If you go further, your neural networks, deep learning is called. It's exactly the same way how neuron works. That is also there. Digital twins are there. Similarly, energy system for real-time optimization and decision making. And reinforcement machine learning, specifically used for the adaptive learning in network systems. Now I have three applications. One is photovoltaic power and weather parameters, solar energy productions, and daily power productions of solar panels. If you are interested on this, any one of this, I can show you how I can go entire machine learning project for that, where I can people write down the code and develop. अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो इंटरेस्ट है नहीं है? Only 4 or 5 students. Are you interested to demonstrate this? Yes, sir. Okay, so if I wanted to go with say photovoltaic power and weather parameters, what is the data set available for this? As I said, lots of websites are there available online which will give you the data set available where you can learn from that data and train your machine learning model. Out of that, one of the most popular websites where the data is available is CATION.
photovoltaic power and weather parameter from cabin. Okay, what this data set is all about? This includes the PV power production measured on solar tech apps of the city called as Milano, Italy. Data are still available for scientific purpose. What this data set consists of? Timestamp. Okay, so we have PM, that is power recording. Air, that is ambient temperature. GHI, global horizontal impedance. GPOA, global impedance measured on the plane of array. WS, measured wind speed. WD, measured wind directions. This is the data set available. You have to download this data set. This data set is downloaded. Data set is available in the zip format. So I'll extract this. This is the data set. We have a timestamp, power, air, there are some time values, wind speed and surge. Okay, so this is the code for that. First of all, we have to input all the libraries and read the data set that we have. Data set consists of temperature, humidity, solar radiations, and so on and so on. Now, once we get this data, you have to prepare the data. You have to find it out what is your x and y. What is your y? The value which you are outputting. What you are predicting? What is x on which your data is present? So you are predicting the energy output in kilowatt based upon temperature, humidity, and solar radiation. Three parameters are there as input for you. And based upon that, you are predicting the output as energy output in kilowatts. Then you have to train your model. अब जो आपका आउटपुट है वो किलोवाट में है, मतलब वो नंबर है, तो मुझे कौन सा मॉडल लगेगा? रिग्रेशन टाइप ऑफ मशीन. I told you when you predict the numbers, it's a regression type. So this is linear regression I'm creating. Model, machine learning model. On that model, I have to first train my data. So I have to give my data so that machine learning will learn it. So I'm fitting, there is a fit function available. Once I train it, then I will use prediction. प्रेडिक्शन में क्या क्या दूंगा? अगर मुझे मेरा मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेनिंग होने जब ट्रेन हुआ था, कौन से पैरामीटर ट्रेन हुआ है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन. तो मुझे अगर किलोवाट एनर्जी प्रेडिक्ट करनी है आउटपुट में, तो मुझे ट्रेनिंग जो हुआ है मॉडल, इसके ऊपर जो टेस्टिंग करनी है, तो टेस्टिंग के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सोलर रेडिएशन. जब मैं डेटा दूंगा तो मेरा प्रेडिक्ट फंक्शन जो है, predict function जो है will give me the prediction which is nothing but the energy in kilowatt. Now once I get a prediction, I have to also evaluate the model. Why this evaluation is important? क्योंकि machine learning का model जो है, at the end of the day it's machine learning. It's a machine. We cannot 100% trust on the machine. So your machine learning model which you are using should be reliable. Means the performance of that model should be good. How do I check it? There are a couple of mathematical parameters are there. One is called as mean square error, MSE. You must have heard this word, mean square error. There is one more parameter called as R2 score, right? Which is coefficient of determinations.
these two terms are getting calculated with the formula, and this R2 score always ranges from 0.0 to 1.0. अगर आपका 1.0 के पास पहुंच रहा है R2 स्कोर, इसका मतलब आपका मशीन लर्निंग का मॉडल अच्छा काम है. Anything which is 0.0 के नजदीक है, तो मशीन लर्निंग मॉडल is not performing good. R2 score and your mean square error. Error कम है means accuracy is high. So if your losses are lesser, means your R2 score will be high. If both these parameters are checked, then I can say, okay, yes, my machine learning model is performing better. I have to also evaluate my model, and then, if needed, I can plot the graph where on the x-axis I can put the energy output, actual, and y-axis predicted energy output, and accordingly I can able to test it and understand how exactly my model is performing. I little bit rushed this because laptop is with the battery 7 for at this moment, and I'm not carrying the charger the laptop. But this is how it works. And as I said, this is the website Kaggle. This one, the most famous one, Kaggle website, through which you can able to get any kind of data set which you are interested in. This is Kaggle, and there is a link for data sets. Maybe you need a data for solar energy production. You can just simply search this. You will get so much of data. Wind and solar daily power production, weather data, hourly power generation data from the solar PV plant. This is also you can use. You get the data set description for this. कहाँ का data है? This is from the city of Calgary photovoltaic project. This is the CSV data. You can download it. Once you observe this data, this is the data. Where this data has been gathered, address of that particular unit, which date, how much kilowatt per hour installation done on this particular date, and its user ID. So from the address and date, you can predict the kilowatt hour consumption of solar electricity. For that, you have to take up this data and train your machine learning model. Data is huge. Likewise, you will get data from Kaggle to take and train your model. Based upon that, you can be able to carry out the things. How you can do it? Mostly it will be used as a regression machine learning model, and this is the code for that. So if you have any question, doubts, you can ask. If you have any question or doubts, you can ask. I'll share this presentation along with the code to the map. You can take it from that in case if you are willing to work on this. But you need a couple of knowledge about Python and the libraries of machine learning. Are requested to Surbhi ma'am to give vote of thanks. Good afternoon, everyone. On behalf of Electrical Engineering Department, I Surbhi Singh, Assistant Professor in Electrical Engineering, I would like to deeply thanks for a short notice sir would come here, Milan sir, and our HOD sir who always motivate us. Thank you, sir.
to focus on AI because that's the thing in near future for you as well. Okay, so all the best.